गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बच्चे? आई होप यू पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ एंड आई एम डूइंग ग्रेट. सो काइंडली please confirm whether you can hear me and see me. And one more request, kindly download the e-notes, yes, from the description box. And today is our GST session number 5. Guys, today is our GST session number 5. टुडे इज अवर जीएसटी सेशन नंबर 5 और डाउनलोड करिए ई नोट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गुड मॉर्निंग विग्नेश, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. टेल मी कैसा लग रहा है आप लोगों को? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स आप लोग कैसे हैं सारे. प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो कैसे हैं सब. एग्जाम्स आर अ मंथ यू कैसे एक महीना ही दूर है और आपको कैसा लग रहा है ये भी मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा. प्लीज लेट मी नो. तो दोस्तों आज का जो एजेंडा मैंने रखा है फॉर टुडेज लेक्चर इज माय डियर फ्रेंड्स एग्जेम्पशंस एंड रिटर्न्स. अर्लियर आई हैव थॉट अबाउट डूइंग मेनी थिंग्स बट टुडे आई एम गोइंग टू डू exemptions and returns. And then tomorrow's session, that will be GST session number 6, all the miscellaneous chapters I'm going to cover. Miscellaneous chapters I'm going to cover, like TDS, TCS, payment of tax, e-way bill, audit accounts, etc. So what I thought about is today our 90% of the GST syllabus will be over. Majority, these are the important 10-11 chapters or 12 chapters. Rest of the chapters जो छोटे छोटे chapters हैं जिसमें ज़्यादा we need not put ज़्यादा emphasis, I'll do in the tomorrow's class and then our GST revision will be over. So guys, good morning to all of you again, and today I'm going to start with exemptions and returns. Exemptions and returns, and download the notes from the description box. आप लोगों ने बताया नहीं कैसा लग रहा है आप लोगों को. You didn't tell me how are you feeling. Please interact. Please मुझे बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को. नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ने वाला. पहले आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा चल रही है पढ़ाई, then I'll proceed. Otherwise not. जी, ये आपकी ऑब्लिगेशन है, आपको मुझे बताना पड़ेगा. सर ये क्या मतलब हुआ? अरे बताओ ना कैसा लग रहा है आप लोगों को, फिर स्टार्ट करते हैं. आर योर स्टडीज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट? यू आर फीलिंग नर्वस? या सर अब वो कल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है, सीए एग्जाम्स तो होंगे, तो जो लोग सीएस के एग्जाम दे रहे हैं, सीएमए के एग्जाम दे रहे हैं, उनको टेंशन हो रही थी कि सोच रहे थे कि सीए के एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाएंगे, हमारे एग्जाम भी पोस्टपोन हो जाएंगे. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा टाइम बड़ा कंड्यूसिव है, होना चाहिए. तो इसलिए ऑल द पीपल हु आर डूइंग सीएस और सीएमए डोंट फील डिसअपॉइंटेड. अब तो पढ़ना पड़ेगा. नो ऑप्शन ऑफ पोस्टपोनिंग ऑफ एग्जाम्स. बताइए जी. चलिए. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे with the topic of exemptions first. If you remember guys, GST में applicability के लिए 5 doors needs to be opened. I've already told you there are 5 gates which needs to be open. If this 5 gates open, GST is applicable. पहला, goods and services. Secondly, taxable goods and taxable services. Taxable goods and taxable services. Thirdly, it should be by a taxable person, taxable territory, and last but not the least, taxable supply. Guys, we have completed the meaning of supply. Taxable territory, whole of India. Taxable person we have done. Taxable person means a person who is a registered person whose aggregate turnover exceeds the exemption limit.
Goods and services we have done. Taxable goods and taxable services means goods और services exempt नहीं होने चाहिए, exempt नहीं होने चाहिए. अगर वो exempt कर दिए जाएं तो जीएसटी लागू नहीं होगा. लेकिन सर अब exempt सप्लाई क्या होती है? सेक्शन 2 क्लॉज 47 में exempt supply means nil rated supply wholly exempt under section 11 which we are going to go today, or section 6 of the IGST Act is a similar section, and non-taxable supply. Exempt supply means a nil rated supply on which GST rate is nil, or which is exempted by the government by way of a notification, or non-taxable supply. You know, non-taxable supply is like alcoholic liquor for human consumption and you know petroleum products. अच्छा, ये सेक्शन 11 क्या है गाइस? सेक्शन 11 में the power is given to the government to exempt, and this power is given under 3 subsections: 11 subsection 1, 11 subsection 2 and 11 subsection 3, in which in public interest government has the power to exempt, yes, any description of goods or services from GST. जनहित में, देश हित के अंदर, आम आदमी के बेनिफिट के लिए नोटिफिकेशन लाएंगे और नोटिफिकेशन के अंदर एग्जेम्प्ट कर देंगे गुड्स या सर्विसेज या बोथ. सिमिलरली 11(2) में ऑर्डर पास किया जाएगा. यहां पर कोई नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बाय स्पेशल ऑर्डर. सी पब्लिक इंटरेस्ट हेयर. जनहित में काम करती है गवर्नमेंट. वही गवर्नमेंट सही होती है जो जनहित में काम करे. जो पर्सनल वेंडेटा में काम करेगी उसको हम गवर्नमेंट नहीं मानेंगे. बात समझ आ रही हो? तो इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर एग्जेम्पशन लाई जाती है. यहां पर ऑर्डर पास करके गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकती है गुड्स और सर्विसेज को. यस. अब ये एक्सप्लेनेशन भी डाल सकते हैं. जो नोटिफिकेशन आएगी 11(1) में या जो स्पेशल ऑर्डर होगा 11(2) के अंदर, उसमें एक्सप्लेनेशन डाल सकते हैं उस नोटिफिकेशन में, ऑर्डर में, बताने के लिए कि किस प्रकार से ये एप्लीकेबल होगी. तो बेसिकली सेक्शन 11 gives the government the power to exempt goods or services. This list, this notification 12/2017, this notification 12/2017, my dear friends, contains the list of exempt services. List of exempt services. Though approximately more than 70-80 services are there. So what did I do is 58 top exemptions. 58 top exemptions I'm going to discuss. तो what I have done in the smart notes is, इन exemptions को मैंने summarize कर दिया है, concise कर दिया है, precise कर दिया है, so that आपको याद करने में आसानी हो. तो ये 58 exemptions रह गई. अब बच्चों के मन में क्वेश्चन ये आता है, सर are these relevant for CS executive? देखो दोस्तों, अगर हम CS प्रोफेशनल की बात करें वहां पर तो ये चीजें हैं. अगर हम CMA इंटर डायरेक्ट टैक्स की इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें वहां पर भी ये सिलेबस में है. CS एग्जीक्यूटिव के स्टडी मैट में एज सच एग्जेम्पशंस नहीं है, बट समहाउ आई फाइंड एग्जाम्स के अंदर एक आधा क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है. इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा, कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा. ये एग्जेम्पशंस को आप पढ़िए. So if you are doing CS executive taxation, you need to do this also. Though as such 1 घंटा लगाने में, इन्वेस्ट करने में कोई नुकसान नहीं है, नॉलेज भी बढ़ेगी. तो ये सेक्शन टॉप 58 exemptions फ्रॉम सर्विसेज, फॉर सर्विसेज जिसपे जीएसटी नहीं है. तो ये मैंने कंसाइज कर दिया आप लोगों के लिए. आइए दोस्तों, पहला है एग्रीकल्चर सर्विसेज. आप इनका ना टैग भी दे सकते हैं, एग्रीकल्चर सर्विसेज. और एग्रीकल्चर सर्विसेज देखो, एग्जेम्पशंस में मैं आपको एक एक एग्जेम्पशन को अंदर नहीं लेके जाऊंगा, ओवरऑल बताऊंगा. एग्रीकल्चर के अंदर वर्ड लिया हुआ है टू. अगर एग्रीकल्चर से संबंधित सर्विसेज हैं उस पे जीएसटी नहीं लगाया जाएगा. कहीं जगह लिखा होता है बाय, कहीं जगह लिखा होता है टू. नोटिस करिएगा गाइस. देखिए एग्रीकल्चर में यहां पे लिखा है बाय, बाय चैरिटेबल एंटिटी. तो सर्विसेज अगर चैरिटेबल एंटिटी देगी तो यहां पर मैं लिखूंगा चैरिटेबल सर्विसेज. चैरिटेबल सर्विसेज. तो चैरिटेबल सर्विसेज बाय चैरिटेबल एंटिटी.
लेकिन अगर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं सर्विसेज दे रहा हूं चैरिटेबल एंटिटी को, आई विल लेवी जीएसटी। बट व्हेन द चैरिटेबल एंटिटी इज गिविंग सर्विसेज, तो कहीं प्रोवाइडर की हैसियत से एग्जेम्पशन है, सुनिए मेरी बात, कहीं रेसिपिएंट की हैसियत से एग्जेम्पशन है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, वैसे तो आप ये एग्जेम्पशंस पढ़ेंगे ना, आपको बहुत एग्जेम्पशंस समझ भी आ जाएंगी, लेकिन आपको याद कैसे करनी है। The top 58 exemptions, either somewhere the provider is exempt, either somewhere the recipient is exempt. But don't worry, I am not going to go into details. वो हमने रेगुलर क्लासेस में फिनिश किया है। मैं ब्रश अप करवाऊंगा, पॉलिशिंग करूंगा, और मेरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, समराइज, मेमोराइज एंड रिकॉल, SMR अप्रोच। दिस इज अ tried and tested and scientific approach where you summarize the things, you memorize the things and recall. People or students who get good marks are following all these three approaches. Summarizing, I have done it for you. Memorizing, when you summarize the things, things become easy to memorize. और memorizing के बच्चे बोलने सर भूल जाते हैं। Yesterday only I received a call from my student. He asked me, सर भूले जा रहा हूं हर चीज, एग्जाम्स पास आ रहे हैं, डर लग रहा है। तो मेमोराइजिंग का बेस्ट तरीका क्या होता है, आप उसको लिखो अपने हाथ से बार बार। आप जब लिखोगे चीजें अपने आप मेमोराइज होती है। यस, तो ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं इसमें आप कुछ अपने आप रफ कॉपीज, यू कैन गेट सम रफ रजिस्टर्स, रफ रजिस्टर्स, आपने याद किया, लिख कर देखा, तो आपको याद होती चीजें याद होती चली जाएंगी अपने हाथ से। जैसे होता ना, कभी कभार हम ड्राइविंग नहीं कर रहे, हम बैठे हुए हैं, वो ड्राइवर कोई सी भी रास्ते ले जाए हम अटेंशन पे नहीं करते, लेकिन जब हम गाड़ी के ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो हमें डायरेक्शंस याद होने लग जाती हैं, क्योंकि हम उसके अंदर कुछ कर रहे हैं। तो आप मेमोराइजिंग करने के लिए तो समराइज करो और लिख लिख के प्रैक्टिस करो, और रिकॉल अपने आप ऑटोमेटिकली होगा उसके बाद। चलिए, तो पहली बात कर रहा हूं बच्चों में, एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर, हाँ, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, दे आर थ्री सेक्टर्स ऑफ एनी इकोनॉमी। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है गाइस मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी सेक्टर मींस प्राइमरी सेक्टर सॉरी मींस एग्रीकल्चर, सॉरी प्राइमरी सेक्टर मींस एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर मींस मैन्युफैक्चरिंग, टर्शरी सेक्टर मींस सर्विस सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर हमारा इनकम टैक्स में भी एग्जेम्प्ट है, और प्राइमरी सेक्टर हमारा जीएसटी में भी एग्जेम्प्ट है। तो यहां पर प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं, मोटा मोटा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रिपेयरिंग द सॉइल टू द टाइम द फार्मर सेल्स हिज गुड्स इन द मंडी विच इज नोन एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, ऑल द सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट। तो एग्रीकल्चर से संबंधित सारी सेवाएं जीएसटी से टैक्स फ्री। अब वो क्या हो सकती हैं, लेबर आपने कॉन्ट्रैक्टर से मंगवाई है, कमीशन चार्ज कर रहा है, जीएसटी नहीं होगा। अगर कटिंग की सर्विसेज ले रहे हो, फ्यूमिगेशन की सर्विसेज ले रहे हो, इंसेक्टिसाइड्स की सर्विसेज ले रहे हो, एग्जेम्प्ट। लैंड किराए पे ले रहे हो, एग्जेम्प्ट। लोडिंग अनलोडिंग करवा रहे हो गुड्स की, एग्जेम्प्ट। किसान एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, आई एम प्रोवाइडिंग सम ट्रेनिंग फॉर फार्मर्स, दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। फ्यूमिगेशन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज को मंडी कहते हैं, मंडी वाले भी कमीशन चार्ज करते हैं गुड्स बेचने के लिए, उस पर भी जीएसटी नहीं होगा। ध्यान देने वाली बात, एग्रीकल्चर के अंदर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स आएगा, साथ में पशुपालन व्यवसाय भी आएगा। पशुपालन व्यवसाय इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर का मतलब होता है ओनली कल्टीवेशन ऑफ द प्लांट्स, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, है ना, एंड डेयरी फार्म्स एंड ऑल, वो दैट इज नॉट एग्जेम्प्ट। बट अंडर जीएसटी रियरिंग ऑफ एनिमल्स, पशुपालन व्यवसाय, वो भी एग्जेम्प्ट है जीएसटी से। बस याद रखिएगा, ओनली हॉर्सेस, अगर आपके स्टड फार्म्स हैं जहां पर घोड़े पाले जाते हैं, हॉर्सेस पाले जाते हैं, उससे संबंधित सेवाएं पर जीएसटी है। तो कल्टीवेशन की सर्विसेज आप किसी से करवा, अब तक अपने आप करेंगे तो बात ही खत्म हो गई। बाहर से लेते हैं सर्विसेज, टैक्स फ्री, नो जीएसटी विल बी चार्ज, क्योंकि किसान को डायरेक्टली फायदा होगा। और दूसरा
animals rearing is also exempt except horses. Second service that is exempt is charitable services. चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, याद रखिए, और चैरिटेबल एक्टिविटीज की ये डेफिनेशन है, पढ़िएगा, लेकिन याद रखना चैरिटेबल सर्विसेज बाय चैरिटेबल एंटिटीज, तो यहां पर प्रोवाइडर एग्जेम्प्टेड है, रेसिपिएंट कोई भी हो, लेकिन अगर रेसिपिएंट चैरिटेबल एंटिटी है तो टैक्स लगेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ये हमारा सेक्शन 12AA इनकम टैक्स एक्ट का है। तीसरी सर्विस गाइस, इसको मैं नाम दूंगा डॉक्टर सर्विसेज, डॉक्टर सर्विसेज, या मैं इसको नाम दूंगा मेडिकल सर्विसेज। मेडिकल सर्विसेज में आप नोटिस करेंगे बाय है, बाय। डॉक्टर सर्विसेज दे रहा है तो एग्जेम्प्ट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर को सर्विस दे रहा है, उसकी ऑडिट कर रहा है या उसके लिए कंसल्टेशन दे रहा है, दैट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। तो मेडिकल सर्विसेज बाय, अच्छा कौन दे रहा है? क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स लाइक फिजियोथेरेपिस्ट। एक सर्विस और एग्जेम्प्ट है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस सर्विसेज। देखो जी, डॉक्टर की सर्विसेज में एम्बुलेंस सर्विसेज ऑलरेडी आता है, लेकिन कहीं कई बार ये स्टैंड अलोन सर्विसेज हैं, स्टैंड अलोन एम्बुलेंस सर्विसेज हैं। मान लीजिए मैंने 15 एम्बुलेंस खरीद ली और मैं एम्बुलेंस सेवाएं डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को दे रहा हूं, तो मेरी सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट है। तो डॉक्टर की सर्विसेज में एम्बुलेंस सर्विसेज आर ऑटोमेटिकली कंटेन्ड, बट माय डियर फ्रेंड्स, एम्बुलेंस सर्विसेज if they are provided by a non-medical person, they are also exempt because they are going to help the clinic or help the doctor. And please try to remember who is an authorized medical practitioner, any system of medicine in India. अच्छा, clinical establishments में क्या आएगा? All these small things you have to remember. And recognized system of medicine में allopathy, ayurveda, or naturopathy, all these systems are recognized by Indian government, so these are recognized. तो एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, या आपकी होम्योपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, ये सब इंक्लूडेड। रेकी सिस्टम इंक्लूडेड नहीं है। रेकी इज नॉट अ recognized system in which it is like not a scientific system but is more based on your aura and more based on your vibrations and all. So that is not a scientific system but a spiritual system. So here recognized systems of medicines are exempt. तो by word याद रखिएगा, यहाँ पर by है। Next, fourth exemption is electricity services. So I give that a tag of electricity services. So electricity services by electricity transmission and distribution utility like BSES in Delhi or NDPL. These are some of the power distribution companies in Delhi. So when power is being distributed or power is being transmitted, power, electricity is not chargeable to GST, and hence transmission and distribution of electricity is outside the scope of GST. Next, fifth services, I call it hotel services. Hotel services. You book a room in a hotel, but the declared tariff is up to 1,000 per day. The room rent is up to 1,000 per day. It is exempt. Otherwise, it will be chargeable. And the room rent includes all facilities. So rent was 800 and plus 400 rupees for, for the water or some bedding. Then it is 1,200. The declared tariff becomes more than 1,000. It will be chargeable to GST. Next is chalta hua business, going concern. You transfer the business as a going concern, and whatever services are related to that, there will be no GST. So I call it chalta hua business. Chalta hua business. अगर आप ट्रांसफर करते हैं जीएसटी लागू नहीं होगा। ये क्या है? ये किराए की सर्विसेज हैं। किराए की सर्विसेज, आई कॉल इट रेंटल सर्विसेज, बट ईच एंड एवरी वर्ड which I have concised and summarized for you, you need to pay attention. Services of renting, residential dwelling, residential house for use as residence. So guys, the house should be residential. Yes, it should not be a commercial house, and use should be residential. So residential house for residential purpose will not be chargeable to GST, but residential house for commercial purpose, GST will be levied.
or commercial house for residential purpose, GST will be levied. Commercial house for commercial purpose, GST will be levied. And please, are you getting it? You people are not giving me anything in the comment box. मतलब हाँ, yes, I've got some messages from you. Audio and videos are fine. Yeah, Rajeshwari, very good. Rajendran, very good. And treatment, you need treatment from me for exam fever. देखो जी, exams fever will always remain. The fear of unknown. Yesterday only, that child, when I told, he was saying to me, I'm forgetting everything. I told him one or two things which I am again repeating for you. The fear of unknown will always be there because exams is an unknown factor. You don't know what to do. And as a mind, we want certainty. As a mind, we want certainty. Or certainty though, only one thing hai, that is death. Nothing is certain except death. So except death, everything is uncertain. That thought of fear or that thought of unknown will always remain. Brave, what is bravery? I was reading a line. Bravery is not absence of fear. It is having the fear and still doing your work. So I recommend to all of you, you make a plan, execute the plan, that's it. Whatever will be, and whatever will not be, not be. So forget about exams. You enjoy the process, enjoy the studies, enjoy giving exams, and let's see what happens. The moment you stop predicting things, because this time what I feel is outside fundamentals or outside aura is too heavy because of this pandemic situation. What I personally feel is you have to recharge yourself every day. So stop predicting what will happen, what will not happen, and start living life as it is. Let's see what life throws us. It throws us success, we'll take it in a stride. If it throws us failure, we will take it in a stride. Forget about everything. If I think about the number of students, sometimes, only 10 students or 5 students or 15 students are there. If I keep on thinking about that, it will not serve my purpose. So I'm not result oriented. I'm here for myself. You want to study, you study. You don't want to study, I'm still happy because I'm teaching for my personal happiness. So here lies the difference. Either you can work for others or you can work for yourself. If you can't keep yourself happy, I find it so amusing in a relationship. मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूं. I want to keep you happy. अरे बाबा, अरे साईं, अपने आप को तो खुश रख लो. So that is the point. People didn't leave Gautam Buddha. गौतम बुद्धा को स्पिट करते थे यार. I was hearing a story yesterday only. There was a person who spitted on the face of Gautam Buddha. And Gautam Buddha, what did he say? Thank you. और कुछ करना है? तो उनके साथ जो आनंद थे, आनंद, वो कहते हैं, भाई बुद्ध ये क्या कर रहे हो आप? क्या जी, जो उसने किया वो उसका कर्म था, मैंने तो कुछ नहीं किया, तो why should I worry? देखो, आई एम नॉट सेइंग आप गौतम बुद्ध बनो, लेकिन यार इन चीजों को देखकर आपको ये लगता है आपने तो कुछ नहीं किया ना गलत, तो लेट द अदर पर्सन डू एनीथिंग रॉन्ग. सो just try to imagine, if you want to have a cool mind, that is the only way. That does not mean you go on the street and said people to, he didn't do anything. So point is, you stay on your track, you study hard, and sometimes success will come, sometimes failure will come. The ultimate thing is to experience. So I am similarly doing the same things. If I keep on thinking about the numbers of students, whether you are studying from me or not studying from me, it doesn't make any difference to me, because I am here to make a difference in my life. I am here to enjoy, and I enjoy teaching.
If it goes well with you, I'm happy. If it doesn't go well with you, I'm still happy because it doesn't make any difference to me. So if you can come on that concept, you will always enjoy. Otherwise, the outcome, the pressure will take you down. ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी लगती है, नहीं है. एक्सपेक्टेशंस, आउटकम्स, फियर्स इतना है कि बर्बाद हो जाओगे. इसलिए मैं आपको राय दे रहा हूं, सिंपल सी बात है, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो, खेलने के टाइम खेलो, बस. वो अननोन फैक्टर्स चलता रहेगा. डोंट थिंक अबाउट इट, डोंट थिंक अबाउट इट. हाँ जी. नेक्स्ट है रिलीजियस सर्विसेज. इसको मैं नाम दूंगा रिलीजियस सर्विसेज. अब देखो यहां पर नोट करना, बाय लिखा है, तो रिलीजियस सर्विसेज आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय. अगर टू होता, तो इफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दिस पर्सन, I will charge GST. But when they provide religious services, the provider is exempt. So sometimes the provider is exempt, sometimes the receiver is exempt. Try to remember this. And after doing your studies from these notes, 50% of your fear will go away. And that is my bet. So you also have to try and strive, and one day you will also become perfect. One day you will also become perfect. आइए, conduct of religious ceremony. You know, in priests, yes, in Hindu religion they are priests. In Muslim they are Maulvis, and in Christian they are father. है ना? तो ये religious ceremonies conduct करवाते हैं. मुंडन करवा लिया, जीवन मरण है. All these services are exempt. Renting of religious place. रिलीजियस प्लेस किराए पे दे दिया, कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, और वो जो रेंटिंग पे, वो एंटिटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए इनकम टैक्स एक्ट में 12AA, 1023C और 1023BBA. बट रेंटिंग की 3 केसेस हैं, ये टैक्सेबल होंगे. इफ द लिमिट एक्सीड्स, एंटायर अमाउंट will be chargeable to GST. Sometimes the mandir has the rooms. The room rent is up to 1,000 per day. यात्रियों के लिए होता है, मे बी सम ऐसा होता है, कोई जैसे शादी ब्याह हो रहा है मंदिर के अंदर, मंदिर के प्रांगण में, धर्मशाला में, कोई मैरिज इज टेकिंग प्लेस, सम बर्थडे पार्टी, सम रूम्स आर देयर, तो रूम रेंट शुड बी 1,000 exempt. Room rent is 1,100, entire amount will be chargeable to GST. Or some halls are given for Sai Sandhya or some function, and up to 10,000 per day. And shops are there selling garlands, incense, and and up to 10,000 per month. The shop's rent is charged by the registered entity, charitable entity or religious entity. Then that will be exempt. But it is more than 10,000, then entire amount will be chargeable to GST. And the best part is religion includes religion, meditation, and spirituality. So these entities might be purely into religion, or purely into meditation, or into spirituality. If I start tomorrow some discourses and I make an entity, Sachin Gupta Charitable Trust, and I start my discourses, and that trust rents out, so that is a spirituality center, na? That is a meditation center. It need not be related to a religion. So it may be a renting of the premises of a religious entity, of a entity engaged in meditation, or entity engaged in spirituality. So let's go through it. And the word is buy. So here the provider is exempt. Next is transportation of passenger. So this is TOP, transportation of passenger by air. Yes, by aeroplane. But embarking means take off, and terminating means landing. These are northeastern states. Government wants to promote tourism here. So when you book a flight from Delhi to Arunachal, or from Arunachal to Delhi, that fare will not have GST. Similarly, all these places. Contract carriage, non-air condition, no GST. And stage carriage, non-air condition, no GST. Now what is contract carriage? Guys, contract carriage is a point-to-point
point to point bus, for example, point to point, which does not have stops in between. Generally, normal buses have multiple stops. They go from A to B, and in which there are multiple stops where passengers come and leave. So this is a stage carriage. Stage carriage which has lot of stages. Both should be non-air conditioned. But if it is air conditioned stage carriage, air conditioned bus, it will be chargeable. But if it is non-air conditioned and it is a radio taxi, it is for tourism or for tour, charter or hire, it will be chargeable to GST. So even if a contract carriage, for example in Delhi, from Jama Masjid to ISKCON temple, there is a tourism bus which is point to point from Jama Masjid to ISKCON temple in east of Kailash. That is for tourism. That is non-air conditioned. Still it will be chargeable because we want to. This is not. So for daily commutation, contract carriage. The contract carriage non-air conditioned, no GST. But even if it is a contract carriage non-air conditioned, but it is a radio taxi, tourism or a chartered or is specifically being hired for a particular day, particular purpose, then it will be chargeable. Next, services provided to central government. This is airports which are coming up in rural areas. Government wanted people to travel. Hawai chappal se Hawai jahaz. Government wanted person wearing Hawai chappal should also travel in a Hawai jahaz. And for that, new airports are coming up in rural areas. Or for that, some type of services, airline companies or construction companies, airline companies will provide subsidized fares. In return, they will get viability gap funding. In return, they will get some funding from the government. Obviously, how can they? Because these routes are not profitable in nature. So when airline companies are rendering services to the central government and for transportation of passengers, and in return they're getting funds from the central government because they are providing services to the passengers at cheaper rates, extra amount which they are getting from central government, that will not be chargeable to GST. And for 3 years. So these are the new airports were coming up under the Regional Connectivity Scheme Airport. Regional Connectivity Scheme Airport. And next, transportation of passenger by, again TOP, transportation of passenger. These 5 types of passenger travel, the tickets will be exempt from GST. Railways, non-AC, non-first class. That means sleeper class. I still remember the days, gone are those days. I still remember 20 years ago, we used to go by sleeper class. But life was it? Simple life. No inverters were there. No laptops were there. Mobiles had just started in 97. And we used to prepare home food and home achar, puri aloo, and used to go by, I still look at the photographs of approx 95, 98, all this time, life was so simple. No hairstyling, no spikes, and we were very happy. And now we have got everything, but still people are not happy. Anyhow, so railways, non-AC, non-first class, but it is AC or first class, it will be chargeable to GST. Metro fare not chargeable to GST. Inland waterways through rivers, they are traveling through a steamer, no GST. Vessel by ships other than tourism, no GST. And meter cab and auto rickshaw. Metered cab, not radio cab. Meter cab is Kali Pili taxi. Yellow and black taxi, specifically talk about Delhi. Or in Calcutta, it is purely yellow. So metered cab, पुराने ज़माने वाली जो taxi होती थी. Services of TOG, transportation of goods by road other than GTA and courier. If GTA is transporting goods, GST is there. If courier is transporting goods, GST is there. Non-GTA, non-courier. Maybe a person having his own truck and which does not issue any consignment note, he will not charge GST.
and inland waterways through rivers, goods are being transported. Again, no GST. Transportation of goods, TOG, by aircraft from a place outside India to custom port of clearance in India. So goods are coming from US to Indian port. That will not be chargeable to GST. Transportation of specified goods by rail or vessel. Rail gadi, chuk 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 chuk, or vessel is ship. All these goods being transported by rail or vessel will not be chargeable to GST. These are necessary things for the development of the nation. And transportation by GTA. This is transportation of goods by road, by GTA. I told you GTA transporting goods are taxable, but these goods transported by GTA are exempt. A to F of point 13. All these 6 goods are also here. They are also exempt. So these 6 goods or 7 goods being transported by rail, transported by vessel, transported by GTA are exempt. Apart from that, yes, if you transport goods by GTA, 2 other exemptions are there. Goods, if the single carriage, there's a single truck, yes, and up to 1500 charge is being taken, there will be no GST. Yes, and goods consideration charge, single consignee, total charge from all the consignees, total charge for all consignments on the truck, may be transporting. For A, he has charged 500. From B, he has charged 500. From C, he has charged 500. Total consignment charge of a single truck is 1500, no GST. But, or up to 750 per consignment. So, total consignments on a single truck should be up to 1500. Then no GST will be charged by the on the service of the GTA, or a single consignment charge should be up to 750. If a single consignment is 800, then GST will be levied on the entire 800. So multiple consignments are there. Entire consignment value should not exceed 1500, or from a single consignment, for a single consignment, it should not exceed 50. Giving on hire, motor vehicles are being given on rent. Yes, more than 12 passenger to state transport undertaking. Here the provider is being exempt. Provider is being exempt, or the supplier is being exempt. Now he is giving a motor vehicle more than 12 passenger state transport undertaking like DTC, Delhi Transport Corporation. Some buses are being given on rent. And means of transportation of goods, you are giving on rent a truck to GTA, that is again exempt. And motor vehicle, you are giving on rent a motor vehicle to a cab services provider. And that cab service provider is providing services to schools. And these cab service provider has, sometimes his own cabs have become out of order, and you have 5 motor cars. So a motor vehicle owner giving motor vehicle to the cab service provider, and this cab service provider will provide services to schools. And what kind of services? Transportation of their faculty, teacher and staff. So ultimately the motor vehicle owner will not charge GST to the cab service provider, and similarly the cab service provider will provide services to the school. So here we are not talking about the cab service provider, we are talking about the motor vehicle owner. Guys, once you go out of Delhi, you need to pay toll charges. Toll charges, NH4, NH8, these toll charges are not subject to GST. Then loading, unloading, packing, storing, warehousing of rice ki loading, unloading, packing and warehousing is exempt from GST. Services by RBI. So RBI to ICICI Bank is exempt, but ICICI Bank to RBI will be chargeable. So here RBI as a provider supplier is exempt. Next, money services. Money. No money, no honey.
money services. So you extend loans, deposits, advances to a person in return for the interest, that will be exempt, but credit card services or the credit card interest will be chargeable to GST. And inter-se, sale and exchange of foreign currency between banks and authorized dealer. Banks selling foreign exchange to authorized dealer selling exchange to banks, or bank to bank. It may be bank to bank, or it may be authorized dealer to authorized dealer. All the services amongst themselves to sell dollars, yen, pound, that will be exempt. Now these are statutory services. Statutory services by Employees State Insurance Corporation, Employees Provident Fund Organization, Insurance Regulatory Development Authority of India and Security Exchange Board of India. Whatever they perform their function as a statutory authority, that will not be chargeable to GST. Services by acquiring bank to persons up to 2000 single transaction of credit card, debit card. Once we swipe our debit card, credit card in banks, in a shop, we swipe our credit card, debit card in a shop, और उसके बाद उसकी पेमेंट सेटल करेगा बैंक. समझिएगा, आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है, आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो स्वाइप करवाया मैंने शॉप पे, और कितने का बिल था? 2000 रुपए का. वो 2000 रुपए पे कमीशन चार्ज करेगा बैंक वाले, क्योंकि बैंक वाले फैसिलिटी देंगे शॉप को, हमसे नहीं चार्ज करेंगे. हाँ, हमने अगर लेट पेमेंट करी क्रेडिट कार्ड पे, फिर इंटरेस्ट पे जीएसटी होगा, लेकिन शॉपकीपर को 2000 रुपए कब मिलेंगे? वो सेटलमेंट होगा, तो वो 2000 की सेटलमेंट के ऊपर जो कमीशन होगा, हाँ 2000 पे हो सकता है 20 रुपए कमीशन बैंक वाले चार्ज करें, उस पे जीएसटी नहीं होगा, याद रखिएगा. नाउ सर्विसेज बाय, अंडरस्टैंड, बाय अगेन प्रोवाइडर की बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, प्रोवाइडर की बात कर रहे हैं. क्या लिखा है? बीएफ, बॉयफ्रेंड है सर. बॉयफ्रेंड, पढ़ाई की बात पे आप बॉयफ्रेंड कह रहे हो. अरे बॉयफ्रेंड मीन्स बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस फैसिलिटेटर. और बीसी ये है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट. ये आपके ना बैंकों में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल होता है और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल होता है. बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल होता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल. दीज आर लाइक इंटरमीडियरीज, दीज आर लाइक इंटरमीडियरीज. बैंक्स वाले अपॉइंट करते हैं. क्यों करते हैं? बैंकिंग को डोर स्टेप तक पहुंचाना है. बैंक आपके डोर स्टेप तक पहुंचता है. देखो जी, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो बैंकिंग कर लेते हैं, लेकिन थोड़े से जो व्यस्त लोग हैं या थोड़े से जिनको ज्ञान नहीं है, तो वहां पर ये बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हेल्प कर देते हैं बैंकों को डोर स्टेप बैंकिंग प्रोवाइड करने में या नए नए अकाउंट्स खोलने में. तो अब क्या लिखा है? बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज दे रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक को, जो अकाउंट्स रूरल एरिया में है. रूरल एरियाज में क्या होता है? किलोमीटर दूर बैंक है, तो वो बिजनेस फैसिलिटेटर डोर स्टेप बैंकिंग देता है. बदले में कमीशन चार्ज करेगा, बैंक से कमीशन चार्ज करेगा, उस कमीशन पे जीएसटी नहीं होगा. तो बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकों को रूरल एरिया के अकाउंट्स के संबंधित सेवाएं देते हैं, उस पे जीएसटी नहीं. हाँ, अर्बन एरिया ब्रांचेस हैं, जीएसटी होगा. और याद रखिएगा रिवर्स चार्ज पे होगा. ये 93 सेक्शन रिवर्स चार्ज. यस, हाँ, रूरल एरिया तो एग्जेम्प्ट ही है. जब एग्जेम्प्ट ही है तो चार्ज ही नहीं है, और चार्ज ही नहीं है. अच्छा, यस करिएगा जो मुझे देख रहे हैं इस टाइम पर. मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं. प्लीज एवरीबडी से यस. यस, प्लीज एवरीबडी से यस. हाँ जी. सो और अगर अर्बन एरिया ब्रांचेस हैं, जीएसटी तो लगेगा, बट रिवर्स चार्ज. अब ये कौन सा है? सर्विसेज बाय पर्सन इंटरमीडियरी टू बीएफबीसी विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज. अब सुनिएगा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट वैसे इंटरमीडियरी होता है, लेकिन अब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने आगे एजेंट अपॉइंट किए हुए हैं. बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने
आगे एजेंट अपॉइंट किए हुए हैं, सारे बच्चे यस करिएगा, आगे एजेंट अपॉइंट किए हुए हैं, इंटरमीडियरी वैसे ही है ये, आगे उन्होंने भी एजेंट, सब एजेंट हो गए ना, ये सब एजेंट हो गए। तो ये भी जो सर्विसेज बीसी और बीएफ को देंगे इस पे भी जीएसटी नहीं है। जैसे जस्ट लाइक यू आर आईसीआईसीआई बैंक, आपने मुझे अपॉइंट किया हुआ है, बीएफ अपना बॉयफ्रेंड या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, मैं आगे रामलाल को अपॉइंट कर देता हूं, तो रामलाल विल बी हेल्पिंग मी एंड मी विल बी हेल्पिंग यू, बट द रूरल एरिया ब्रांचेस शुड बी देयर। So neither I will, Ramlal will charge commission to me, I will charge commission to you. In that case, that commission will not be chargeable to GST if it is rural area account. But is urban area account, that commission which the Ramlal will charge to me, reverse charge on me, and the commission which I will charge to the bank, reverse charge on the bank. चलिए next. और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बैंकिंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बैंकिंग या बिजनेस फैसिलिटेटर इंश्योरेंस कंपनी को भी सर्विसेज दे, रूरल एरिया में इंश्योरेंस पॉलिसीज भी बेच रहे हैं उसकी कमीशन पर। हाँ, आप इंश्योरेंस कंपनी हो, आपने मुझे अपॉइंट किया है एंड आई एम सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज इन द रूरल एरिया, तो वट एवर कमीशन आई विल चार्ज, नो जीएसटी। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय recognized technology business incubator, technology business incubator, yes, or step means science and technology entrepreneurship park. Guys, these are tech centers, technology centers। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए ये टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर या साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए जाते हैं। यहां पर एक बिजनेस को अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है तो सुविधाएं मिल जाती हैं सस्ते में, उसको मैन पावर मिल जाती है, आईटी सर्विसेज मिल जाती है, टेलीकॉम सर्विसेज सस्ते में मिल जाती हैं। तो ये जो सुनिए, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर या साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क सर्विसेज रेंडर करेंगे ना, जैसे आप ओनर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के और मैं आपके पास आया कि मुझे बिजनेस बनाना है, एक मेरा ये मॉडल है, ये मुझे टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, आप मुझे सर्विसेज देंगे ना सस्ते में, आप मुझे एरिया देंगे किराए पर, आप मुझे टेक्नोलॉजी देंगे, आप मुझे लेबर प्रोवाइड करेंगे, तो उस केस में यू विल नॉट चार्ज जीएसटी। So services by TBI and Science and Technology Park owners will not be chargeable to GST. And best part, this incubatee is the person, मैं हूं, this is मैं, ये आप हैं, आपका पार्क है और आपके पार्क में मैं आया हूं टेक्नोलॉजी सेटअप, फिर मैं भी तो सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, तो मेरी टर्नओवर 50 लाख तक होगी और 3 साल तक मेरी भी जीएसटी नहीं है। तो भाई पार्क का ओनर जब मुझे सर्विसेज देगा एग्जेम्प्ट और मैं टेक्नोलॉजी डेवलप करके मैं भी तो लोगों को सर्विस दूंगा 3 साल तक एग्जेम्प्ट। ये लीगल सर्विसेज 26 इज लीगल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज आल्सो एग्जेम्प्ट। लीगल सर्विसेज में 3 मेजर बात की गई है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, एडवोकेट्स, जो जूनियर एडवोकेट्स हैं, इनको नाम दे दिया मैंने जूनियर एडवोकेट और इसको नाम दे दिया मैंने सीनियर एडवोकेट। अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। समटाइम्स द कोर्ट सेज गुप्ता जी एंड रामलाल डोंट फाइट, आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड, मध्यस्था, हिंदी में बोले तो मध्यस्था, अगर मैंने सही बोला तो कोई टेंशन नहीं। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल चार्जेस सम कंसिडरेशन and if they are providing services to non-business entity, पति पत्नी, अब पति ऐसे जो भी है, हस्बैंड वाइफ, आई थिंक दैट इज मच बेटर। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, ये तो आम बात है ना दोस्तों। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, ये तो आम बात है आजकल, मेरे भी हो गए, मतलब अभी 1 महीना पहले हुआ था, अब तो नहीं हुआ, अब तो
हो जाता है ना, when you're always sitting at home, though I'm spending more than 10 hours in my studio, but still सामना आमना तो होता ही है दोस्तों, तो फिर तलवारें निकल जाती हैं, है ना। तो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है तो दे आर, और तलाक की बात है तो कोर्ट ने कहा एक बार आर्बिट्रेशन में चले जाओ, या पैसे की लेन देन है, कुछ ऐसी बात है जो बिजनेस नहीं है, पर्सनल पर्पस के लिए, कोई पर्सनल पर्पस के लिए केस है, उसमें आर्बिट्रेशन है, जीएसटी चार्ज नहीं होगा, कंसिडरेशन होगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अच्छा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज नॉट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, वो तो शेड्यूल 3 में है, कोर्ट सर्विसेज तो शेड्यूल 3 में है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, बट ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, याद रखिएगा। बिजनेस एंटिटी, अच्छा रिलायंस को दे रहे हैं सर्विसेज, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख, 10 लाख या वो 40 लाख लास्ट ईयर, तो अनरजिस्टर्ड एंटिटी है एक तरीके से, जिसकी टर्नओवर 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख लास्ट ईयर थी, तो वो बिजनेस एंटिटी करंट ईयर में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रिलायंस को सर्विसेज दे रहा है, और लास्ट ईयर टर्नओवर 20, 10, 40 तक थी, या गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस केस में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विल नॉट चार्ज जीएसटी। जूनियर एडवोकेट विच इज नॉट अ सीनियर एडवोकेट, 1 2 3 सेम, and if he gives services to another advocate, he will not charge GST. A senior advocate providing legal services, obviously सारी legal services ही हैं, in any branch of law. Senior advocate 1 2 3 same, but he will provides to another advocate, that is chargeable. Another advocate, that is chargeable. Because here you know junior, अच्छा what is junior senior, that will depend upon the Advocate Act, है ना, we'll see according to the seniority. Next, services by animal doctors, he charges fees for your pet, because that pet got ill, he will not charge GST. Services by independent journalists which sell their news to newspapers and channels, PTI, Press Trust of India, and UNI, United News India. So they collect news and provide news. These are also exempt from the Income Tax Act, because they help to disseminate news, they help to disseminate information. तो ये न्यूज एजेंसीज की इनकम ना इनकम टैक्स में आती है ना जीएसटी। पब्लिक लाइब्रेरीज, अब तो गूगल बाबा हैज बिकम द लाइब्रेरी, बट यू नो यू बिकम अ मेंबर ऑफ अ लाइब्रेरी, they lend books, publications, they will not charge GST. I still remember when I was young, though I still feel I'm young. So we used to hire Chacha Chaudhary and Pinku and Nagraj ki kahaniyan, and he used to charge Champak, and that shopkeeper which used to have a small library. Yes, it was such exciting days, Anna. Again, I'm coming back to those old memories. 1 rupee is to collect. Now these libraries have all closed down because of the mobile phones, internet and online stuff, but if still it is there, you know, Oxford libraries and then other British Council libraries still are there, they will not charge GST. Now services by GST, and that is the Section 8 company which has been made, which has been which provides the infrastructure, IT infrastructure, GSTN. Obviously they get funding by from the government. Whatever the services they provide to the government for implementation of the GST, that GSTN company will not charge GST to the government. Services by organizer business exhibition outside India. So the organizer is in India, they are conducting a business exhibition outside India, they will not charge GST. Though because the services are being utilized outside. Though he is in India, the organizer, but the exhibition is outside. Sponsorship of sporting events. Whenever these national sports federations and all these federations organize a sporting event, and they, you know, Pepsi is sponsoring that event, sporting event, and in return Pepsi wale will give them 50 crores, no GST will be charged by the sporting event organizer, because this is again national games, and these are sporting events relating to, you know, not on a very big scale, and secondly these are no international teams are involved, this is a part of, you know, Indian khel or Indian sports infrastructure. So whenever these events are organized by these federations, civil services organizations,
नेशनल गेम्स, पंचायत, गांवों में कोई कबड्डी का मैच हो रहा है जो पंचायत ने ऑर्गेनाइज किया है, पेप्सी वाले स्पॉन्सर कर रहे हैं, जीएसटी लागू नहीं होगा। और वैसे भी अगर होता तो रिवर्स चार्ज होता है वेन एवर स्पॉन्सरशिप सर्विस। एक बात याद रखिएगा, एग्जेम्पशन वाली लिस्ट अगर एग्जेम्प्ट हो गया तो नो चार्ज, इफ नॉट एग्जेम्प्ट देन सी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है या डायरेक्ट चार्ज मैकेनिज्म है, ये बात और याद रखिएगा। हाँ जी बच्चों, अगर एग्जेम्प्ट हो गया तो नो चार्ज, लेकिन अगर याद रखिएगा अगर एग्जेम्प्ट नहीं हुआ तो आरसीएम है या डायरेक्ट चार्ज मैकेनिज्म है, ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जॉब वर्कर इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रियरिंग। किसी जॉब वर्कर को हायर किया है एज अ फार्मर, कुछ आपने प्रोसेस करवाया है जॉब वर्कर से, बिल्कुल। तो ऐसे ही जानवर पशुपालन व्यवसाय एक जॉब वर्कर को हायर करता है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, दैट जॉब वर्कर विल नॉट चार्ज जीएसटी। सर्विसेज ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, whatever the consideration is, no GST. Services of preconditioning, pre-cooling, ripening, waxing, retail packing of fruits, vegetables. You know, fruits and vegetables needs to be stored at the right temperature. For that, there are organizations which help you to store your foods or your fruits and vegetables. So they pre-cool, ripening, putting on waxes. So you hand over, they will charge 1 lakh rupees. And they will, your fruits needs to be transported. So for transportation, you need to prepare them. So for example, we go out of India or out of Delhi, we need to prepare ourselves. So similarly, these facilities of preconditioning, pre-cooling, ripening, fruits कच्चे हैं, पका देंगे वो आपके लिए, whatever they will charge GST, whatever they will charge, that will not be chargeable to GST. Services by foreign diplomatic missions, foreign embassies in India, whatever services they provide, they will be exempt. These 37 is religious pilgrimage. अगर आपको हज जाना है, जो हज कमेटी ऑर्गेनाइज करती है, या कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है जो कुमाऊं मंगल विकास निगम ऑर्गेनाइज करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बायलैटरल एग्रीमेंट है। अगर हम हज की बात करें, I think that is situated in United Arab Emirates, Mecca, Medina, if I am not mistaken. Gulf countries में है वो, I am not knowing the exact UAE में या कहाँ पर है, if correct me if I am wrong. और इसके लिए चाइना के साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है, कैलाश मानसरोवर, because that is in China. So यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके साथ एग्रीमेंट करती है फॉरेन कंट्री के साथ, और बदले में लोगों को हज करवाती है, उसके लिए सिस्टम होता है, और लोगों को कैलाश मानसरोवर यात्रा करवाती है, उस सर्विसेज पे जीएसटी नहीं है। ये एजुकेशन सर्विसेज है, दीज आर एजुकेशन सर्विसेज। अगेन एजुकेशन सर्विसेज देयर इज नो जीएसटी बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ. So education institution is providing services to students, faculty and staff, they will not charge GST. So in return, the students pay the fees, and some facilities provided to the staff and some facilities is provided to the faculties, that will not be chargeable. By education institution, they are conducting entrance examination for entrance fee. That entrance fee will also not be chargeable to GST. To education institution, cab services. School people have hired cab services for transportation of students. The cab services provider will not charge GST. That is the canteen owner is providing services to the school. The canteen owner will not charge GST. This is the security services. Some outside agency has been hired to provide security in the premises. That agency will not charge GST. Services related to admission and conduct of examination. Generally examinations and admissions are conducted by the school teachers. Special duty के लिए बुला लेते हैं टीचर्स को.
लेकिन अगर आउटसोर्स कर दिया है, that outsourcing agency will conduct the exam, will conduct the admission of nursery or whatever the class. It will not charge GST. And online education journals and periodicals services have been availed from a website which will provide online journals and online periodicals to the education institution. That agency, online agency, will not charge GST. But mind you, education institution means three. Education institution means three: preschool to 12th, school education institutions, education part of the curriculum for qualification recognized by law, education part of the curriculum, qualification recognized by law. So this can be treated as ICSI courses launched by the ICSI, ICMAI courses, or IITs, IIMs, universities, because whatever courses they are provide is for a qualification recognized by law. And approved vocational education institutions which are approved by National Council of Vocational Training or State Council of Vocational Training, which provide skills. तो पढ़ाई से संबंधित स्कूल या कॉलेजेस या वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इन सब की दो जगह बाय है, एक जगह टू है. एक बात याद रखिएगा, आइटम सी में ए बी सी की एग्जेम्पशन, ए बी सी की एग्जेम्पशन सेकेंड और थर्ड इंस्टीट्यूशन को नहीं है. ये तीन एग्जेम्पशन सेकेंड और थर्ड को नहीं है, यानी कि ये आईसीएमआई को नहीं है और अप्रूव वोकेशनल कोर्स को नहीं है, यानी कि ये तीन एग्जेम्पशंस खाली स्कूल के लिए हैं. अच्छा, यानी कि कैब सर्विसेज कॉलेज वाले, कैब ओनर कॉलेज को सर्विसेज दे रहा है, कैब ओनर आईआईटी को सर्विसेज दे रहा है, कैब ओनर वोकेशनल ट्रेनिंग को सर्विसेज दे रहा है, जीएसटी है. तो ये तीन एग्जेम्पशन टू स्कूल्स ही रह गया है. यस, ये तीन एग्जेम्पशन स्टार्टिंग वाली थी. अच्छा, याद रह गया. और ई वाली एग्जेम्पशन नॉट टू फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, तो ये वाली जो एग्जेम्पशन है ये स्कूल को नहीं मिलेगी. अच्छा, ये वाली एग्जेम्पशन किसको मिलेगी? अगर ये कॉलेजेस को ऑनलाइन वाले, कॉलेजेस वाले ऑनलाइन पीरियोडिकल्स मंगवाएं, या स्कूल वालों को ऑनलाइन पीरियोडिकल्स का क्या मतलब, लॉजिक ये है. अच्छा, ये फोर्थ वाली तो सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए. तो स्टार्टिंग की तीन एग्जेम्पशंस इफ दे आर प्रोवाइडेड टू स्कूल्स आर एग्जेम्प्ट. लास्ट एग्जेम्पशन नॉट टू स्कूल, टू अदर, टू वोकेशनल इंस्टीट्यूट और टू यूनिवर्सिटीज एग्जेम्प्ट. याद रखिएगा. नेक्स्ट गाइस, सर्विसेज बाय आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जहां पर एज पर लॉ वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो एग्जेम्प्ट. अगर एज पर लॉ नहीं है, यानी कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, जैसे डिप्लोमा टाइप की चीज है, हाँ, लेकिन देखो अगर लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज, वो जो उनका टू इयर्स पीजीडीएमए होता है, या डिप्लोमा दे रहे हैं एज पर लॉ दे रहे हैं, जहां पर डिग्री मिलेगी, कुछ मिलेगा, वो तो एग्जेम्प्ट है. लेकिन एग्जेम्प्ट क्या नहीं है आईआईएम का? ऐसे शॉर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर एनहांसिंग द स्किल्स, नो डिग्री डिप्लोमा इज प्रोवाइडेड, दैट विल बी टैक्सेबल. तो सर्विसेज टू. So here services are received by, so here as a receiver it is exempt. You know, Virat Kohli is providing services to BCCI as a player, referee, somebody else, umpire, coach, team manager for a sporting event organized by recognized sport board. Right? Recognized sport boards are these. So Indian BCCI or a hockey player is providing services to Hockey India, that will not be chargeable to GST. Or you know, one RSB providing service to another RSB. You know, BCCI providing services to Hockey India. Why? You know, their grounds are empty, no cricket match is being conducted. Hockey India approaches BCCI to provide their stadium, so that charges will be exempt from GST. So the players, the referees, the coaches, the umpires providing services to the BCCI will be exempt. And when one recognized sports body providing service to another recognized sport body, that will also be exempt. Services of cord blood banks for preservation of stem cell is exempt. This is the umbilical cord of the child when he is born, that is stored
and then can be stored for 8 to 10 whatever years. If some deformities arises, the stem cells can be used, and they charge approx 1,80,000 for storing the umbilical cord of the child. That will not be chargeable to GST on the charges. Services by common biomedical waste treatment facility. Common biomedical waste treatment facility. These people process the medical waste and they provide services to hospitals for collection of their waste. Whatever charges are there, no GST. This is Shulabh. Shulabh Shauchalaya. They charge consideration for use of the washrooms, bathrooms, urinals and toilets. That Shulabh Shauchalaya charges consideration will not be chargeable to GST. Are you people with me and getting what I'm saying? Please confirm yes. Because if you confirm yes, then only I can know you are getting it or not. Next, services by these are clubs and associations. What they are providing is services by unincorporated body or registered MPO to own members, and they charge consideration from the members. That will not be charged GST. Only 3 is given. Trade unions, they charge consideration from the members. It will not be chargeable GST. Activity exempt from the levy of GST if itself the unincorporated body or the registered NPOs providing services which are exempt. So whatever charge they charge from the members, that will also be exempt. And RWAs, Resident Welfare Association, they provide services to their members, the residents of the colonies. If the consideration is 7,500, the consideration is 8,000 per month per member, entire amount will be chargeable to GST. Next, like Hema Malini. Hema Malini is an artist performing folk and classical art. If she charges 1.5 lakh for the performance, the music performance, dance performance or theatre performance, that will not be chargeable. But she is also a brand ambassador of Kent Water Purifier. If Kent Water Purifier is organizing a dance function of Bharatnatyam and Kathak, whatever it is, she is a trained dancer. Even she charged 50,000 from Kent Water Purifier, it will be chargeable because that is not for the promotion of art. Indirectly, it is promotion for the brand. If a person is as a brand ambassador providing services, उस पे GST लगेगा. अच्छा, ये म्यूजियम की जो टिकट होती है, नेशनल पार्क की जो टिकट होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, Ranthambore and Benemberry wildlife sanctuaries are there, Tiger Reserve, Jim Corbett Tiger Reserve, Zoo, protected monuments, some protected monument under the Archaeological Act. All the admission tickets, ticket price पे कोई GST नहीं होगा. Ticket price पे GST नहीं होगा. Next, training or coaching recreational activities. Art or culture की coaching. Tomorrow I'll start, training in art, some kind of drawings, paintings, sculptures. That coaching is not chargeable to GST. Or sports coaching by charitable entities registered under 12AA is not chargeable to GST. So art, culture coaching and sports coaching is not chargeable to GST. 500 rupees की अगर ticket है per person, no GST for the admission to circus, dance, theatre, drama, ballet, award function, concerts, pageants, musical performance, some music night is there, or sporting event. If it's greater than 500, the ticket price, entire amount will be chargeable to GST. You obtain some information from the government under the RTI Act that fees which you pay, Hanji, and it will not be chargeable because they provide you services under the RTI Act. If you file an RTI, I don't know the application amount. Earlier it was 10 rupees, but now I don't know what is the amount. So whatever you are giving is because they are providing you services under the RTI Act, that fees will not be chargeable to GST. Next is storage, warehousing of cereals, pulses, storage and warehousing. All these storage, warehousing will not be chargeable to GST. So these were top 50 exemptions which you need to remember. So how it has become easy for you now? Only these 50. Dekho, again I am repeating, there are other exemptions, but these are the top most exemptions. It's always better
to do 98% of the things rather than 100% of the things and forgetting everything. So please pay attention to this 50 top services. Next is, these 8 services. I told you at the starting there are 58 services I will be discussing. These were the top 50, and next 8 services are services by central government, state government, union territory, local authority. Central government, state government, union territory, local authority. यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 services हैं which are exempted if they are provided by the government. See, services by above means this person. Services by government are exempt, but these 4 services of the government are taxable. These 4 services of the government are taxable. Apart from these 4 services, every service of the government is exempt. Yes, postal department services, speed post, express parcel post, life insurance and agency services to non-government persons. Again understand the word speed post. Ordinary post की बात नहीं कर रहे, वो exempt है. Ordinary post exempt है. Registered post exempt है. Registered post exempt है. Postcard services exempt है. Book post exempt है, क्योंकि टैक्सेबल जो करा है ये एक्सेप्शन में है. स्पीड पोस्ट, पार्सल पोस्ट एक्सप्रेस, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज. इवन राजेंद्रन will tell me, he has worked in the postal department, he knows the difference between the two. These are the old generation services. Inland letter services, and these are the new services. So the new services of the postal department will be chargeable to GST, but they should be to a non-government person. If they are given to public, it will be chargeable to GST. If to non-government, it will not be chargeable to GST. So postal services of aircraft and vessel at port or airport, vessel and aircraft services provided to, Air Asia planes or to ship companies, and where government is charging some, some charges for landing or some repairing charges government is charging, maintenance charges on the airport government is charging, it will be chargeable GST. Transportation of goods and passenger by the government. Government has its railways, government has its buses, that will charge you GST, but subject to other exemptions. You can write then, these are taxable, subject to other exemptions. Subject to other exemptions. Subject to other exemptions. Yes, maybe it might be exempted in another point. Or any other services like 4G license, 5G license, other than A to C, yes, to business entity, to Reliance, Tata, Bata, Chata, and etc. So 4G, 5G, or some other services are provided to business entities. So government services are generally taxable except these 4. Now, if it is provided to a business entity, but the business entity turnover, aggregate turnover is 40, 20, 10 in the preceding financial year, yes, my dear friends, it will be exempted. Yes, but these services to business entity should not be covered in A, B, C. Oh, if Air Asia is a business entity, so these 3 services are taxable irrespective whether they provided to a business entity or not. These are taxable. So if Air Asia is getting a service at the port from the government, that will be chargeable, even if the turnover is 40, 20, 10. But I am talking about any other services. ये जो exemption है 52 वाली is relating to this. तो दोबारा से मैं हिंदी में बोलूं, postal services, aircraft vessel services, transportation of goods or passenger, these are taxable. Any other service to business entity, तो ये जो any other service है उसके लिए बात कर रहे हैं हम. like 4G license, 5G license to a business entity which has a turnover of 40, 20, 10 the preceding year will not be charged with GST. And yes, renting of immovable property by the government will be chargeable to GST, even if the tenant is a business entity. So this is the difference between the two.
the turnover is up to 40, 20 or 10. So guys, so my dear lovely friends, this fourth D has some exceptions. So I've told you, दोबारा से रिपीट करूंगा, ये जो डी वाली है 3G लाइसेंस 4G लाइसेंस बिजनेस एंटिटी को चार्जेबल, लेकिन बिजनेस एंटिटी में ये 3 सर्विसेज की बात नहीं कर रहे, ये तो बिजनेस को दो कैसे भी दो जीएसटी है, या इमोल प्रॉपर्टी इज अगेन चार्जेबल टू जीएसटी. ग्रेट. अच्छा, अगेन ये बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहे हैं, याद रखिएगा, वो अगर अप टू 40-20 नो जीएसटी और 5,000 तक दे रहे हैं नो जीएसटी, तो ये जो 52 और 53 वाला पॉइंट है ना, ये इस बिजनेस एंटिटी से रिलेटेड है. तो अगर मैं ये बोलूं, सुनो मेरी बात, इफ आई मेक इट क्लियर टू यू, अगर आपको अभी समझ नहीं आया है, देखिए, बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रही है गवर्नमेंट, सुनिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर चार्जेबल. बिजनेस एंटिटी को दे रही है एयरक्राफ्ट और वेसल वाली चार्जेबल. हाँ, अप टू 5,000 रुपए की सर्विसेज हैं, नॉट चार्जेबल. बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं और अप टू 40 lakhs 20 lakhs 10 lakhs है, नॉट चार्जेबल. ये ऐसे है. सो ये जो फोर्थ वाली सर्विसेज हैं बिजनेस एंटिटी को दी जाएं, लेकिन अगर बिजनेस एंटिटी की 40, 20, 10 है प्रीसीडिंग ईयर में, तो करंट ईयर में वी विल नॉट चार्ज जीएसटी. या 40, 20, 10 से ज्यादा है लेकिन अमाउंट ही 5,000 रुपए का है, छोटी सी सर्विसेज, स्मॉल सर्विसेज और स्मॉल एंटिटी. सो गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को, स्मॉल एंटिटी है वो एग्जेम्प्ट, तो दिस बिजनेस एंटिटी शुड बी अ बिग एंटिटी. ठीक है. नेक्स्ट, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट ऑफ इशू ऑफ पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट्स आर एग्जेम्प्ट. यू नो, पैन कार्ड सर्विसेज आर चार्जेबल टू जीएसटी. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट पैन कार्ड सर्विसेज, है ना. नेक्स्ट, services by government by tolerating non-performance of the contract. You know, government entered into a contract with you and you know you didn't perform the contract and government has charged you fines and damages. That will not be chargeable to GST. God's sake, thank you. So government has entered into a contract from you and you break the contract, and because of that government is tolerating non-performance of the contract, GST will not be charged. Services by the government to individual farmer, right to use natural resource, some land is given on rent by the government to an individual farmer for cultivation of plants or for animal business, that will not be chargeable to GST by the government. Services by the government for registration under any law, you know, for egg mark, you know, you need to register yourself, or GST you need to register, then you need to pay certain amount to get yourself registered. That will not be chargeable to GST. ISI mark, you know, and testing, calibration. So all these, yes, all these charges will not be chargeable to GST. Next, 58, services by fair price shops. These are the ration shops. Ration shops, they charge certain commission from the government because they sell goods, food grains, kerosene, sugar, under the public distribution system for a consideration of margin. They will not charge GST. Finish in approx 1 hour 20 minutes, approximately 80 minutes. We have revised the entire services. This is the importance of revision, which gives you immense confidence and which gives you hope, and hope is the only thing which we require. Next, these are certain IGST services which are exempt. IGST services. Yes, these are under the IGST Act. Yes, services from non-taxable territory, from foreign countries. To above means government. So from outside India, services are received by the government. In that, river charge is there, but it is exempt. Or
Individual for personal purpose. I told you when we were doing section 7 and section 7 1b, import of services, 7 1b if I am not mistaken, import of services for personal use or commercial use is supply. That, but I told, as per the IGST, if you import services for personal use, they are exempt, or they are being imported by a charitable entity, exempt, or person located in from a foreign country to another foreign country, then obviously it will be exempt. Okay, you can just go through it. Services received by RBI from outside India. You know, RBI has hired a foreign expert, for management of FX reserve, foreign exchange reserves. So they have hired a foreign exchange reserve specialist, how to manage the huge kitty of foreign exchange reserve which the government of India has, exempt. Service by tour operator to a foreign tourist. Foreign tourist wants to, he's a tourist of USA, he wants to go to UK, and this tour operator is in India. So though he is in India, performing services in India, but that foreign tourist is for a tour located wholly outside India, or a foreign tourist is in India, he has come to India, but the tour will be outside India. So he's making a tour. So again, the supply is not taking place in India. And this is services received, provider of service in non-taxable territory, supply of online education journal or periodicals to education institution, qualification by law, यानी कि to IIT, IIMs, or to ICSI. So services received by IIT, IIM for qualification, as per the law they provide the degree, and they require foreign periodicals, foreign journal subscription. So the IIT, IIM people have subscribed from a foreign supplier some online journals, and that will be exempt from the IGST Act. Yes, the foreign supplier will provide online journals to IIT, IIM. It is not an Indian supplier, foreign supplier. That will be chargeable, not chargeable to GST. Finish. Yes, my dear friends. Earlier, I thought about having a long session. Then I thought about, let's have a small session today and another last session tomorrow, where, you know, we are going to complete this e-way bill, TDS, TCS, accounts, records, and all the small chapters. So today, this is the last topic, and that is filing of returns. You know, easy way to remember returns is this beautiful chart which I made for you at the end of the chapter. Though I have summarized the provision of returns, but I don't intend to enter into the details. For your benefit, my dear lovely people, I have made a chart, a beautiful chart for you, where all the returns have been summarized for you. Yes, this is the chart which I want you to go through, where, you know, 11 returns. Yes, I'm just going to give you a brief idea about this, and then this chart. So these 2 pages will summarize the entire concept of return for you. Though if you want, you can go through my regular lectures and study the detailed treatment of the individual things. But I intend in this classes to freshen up your memory, and let's see what exactly it is. Yeah, I'm just lost track of your video. Just a second, my dear lovely friends. Let me see where you are. Yes. So these are the returns. GSTR1 return. This is the sales return. Sales return. Yes. Where you sell goods, supply goods, your outward supply, and has to be filed by normal registered person. It is a monthly return by the 11th of the next month. These are the new dates as per the actual position. GSTR2, it has now been, you know, temporarily suspended. It is not done these days. Details of inward supply, details of your purchases, and this is to be done by normal registered person by the 15th of the next month. This has been suspended.
GSTR 3, again guys, this has been suspended. Instead 3B is there. What is GSTR 3? It was a consolidated, it was supposed to be a consolidated return showing your sales and purchases. So guys, बिक्री की, खरीद की और बिक्री और खरीद की, तो बिक्री की रिटर्न तो अभी भी है, सेल की रिटर्न तो अभी भी है, खरीद की रिटर्न एबॉलिश कर दी गई है, सस्पेंडेड है. जीएसटीआर 3 कंसोलिडेटेड परचेज सेल की वो सस्पेंडेड है जो मंथली 20 तक, लेकिन उसकी जगह 3 की जगह 3B हो गई है. समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, आईटीसी डिक्लेयर्ड, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन, मंथली है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. बट जीएसटीआर 3B में भी बहुत वेरिएशंस हैं. यस माय डियर फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B with effect from January 20. Yes, annual turnover of previous year of more than 5 crore, 20th of the following month, which I told you in the chart. Annual turnover is up to 5 crores. Then it will be 22nd of the following month and 24th of the following month for these states and these states. तो GSTR 3B जो अगले महीने की 20 तारीख तक थी वो सभी के लिए थी, लेकिन जनवरी 20 से गवर्नमेंट ने ये चेंज किया. ये नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, एक मैंने ब्रीफ आइडिया दिया है आपको, ये चेंज होती रहती हैं, एक मैंने ब्रीफ आइडिया दिया है आपको कि 3B अब एक आपकी समरी रिटर्न है, आपकी टोटल समरी रिटर्न है. यस, तो जीएसटीआर 3B इज योर समरी रिटर्न. जीएसटीआर 4 कॉम्पोजिट डीलर की ये रिटर्न पहले क्वार्टरली थी, एनुअली हो गई है 30th अप्रैल तक. जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न हो गई है. कॉम्पोजिट डीलर नाउ will file GSTR 4. Yes, 30th April GSTR 4. He will pay taxes quarterly. By the 18th, and he will also be filing a GST CMP 08 by the 18th. तो पहले रिटर्न इसकी GSTR 4 क्वार्टरली थी, लेकिन वो अब हो गई है annually by the 30th April of the next year. But the taxes he has to pay by the 18th of the end of the quarter. GSTR 5 is NRTP, non-resident taxable person, monthly return 20th of the next month or 7 days of the expiry of registration, whichever is earlier. 5A is by OIDAR services, monthly 20th of the next month. GSTR 6, input service distributor, monthly 13th of the next month. GSTR 7, TCS deductor, monthly 10th of the next month. GSTR 8, ECO, monthly 10th of the next month. GSTR 9 is an annual return by a normal registered person other than ISD, other than TCS deductor, other than TCS, other than composite dealer, other than NRTP, annual return by the 31st of the next year, 31st of the next year, next financial year. Annual return of a composite dealer is 31st December of the next 31st December of the next year, next financial year, and again 31st December of the next financial year. Annual return of ECO, annual return for ECO 9B, annual 31st December, and 31st December of the next financial year. 9C, normal taxpayer having average turnover more than 2 crores. Yes, 31st December. GSTR 10 is your final return only when the GST registration is cancelled within 3 months of the date of cancellation or the order of cancellation, whichever is later. And GSTR 11 is for, those United Nations identification number, unique identity number they have been given. Yes, they are not given GSTIN. They are not normally registered. They are registered unique identity number they are being given, and they need to file monthly return. The time limit is not mentioned. Yes. So guys, now I'll complete the session for today, and I wanted to keep the session long, but I ultimately decided the essence has to be short. So these 2 chapters would have taken me 3 or 4 regular classes, but I tried in 1.5 hours so that the things can become shortened for you. And tomorrow I intend to take the last lecture for the GST, where 7-8 small chapters I'm going to summarize and revise for you.
So I hope you have liked the session, and if any queries you have, please mention in the chat box, and whenever I get the time, I will look at it and respond. So that's all for today, guys. That's all for today. Happy studying and a happy life. I wish you all the best.